Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So this is another video in our series of covering major happenings throughout the year. This one pertains to the toolkit case. There was a very famous issue that happened with respect to a toolkit. So let's understand what was this issue about, what was this case about. What is this toolkit controversy? Now, what happened was everybody must be aware or should be aware of this name, Greta Thunberg. She is the girl who was actively fighting against climate change for a long time, and she had tweeted a toolkit. She's from Sweden. She's a climate change activist. एक climate change activist हैं जिन्होंने एक tweet डाला on Twitter pertaining to a toolkit. एंड फ्यू मिनट्स लेटर कुछ समय बाद उस टूल किट को डिलीट कर दिया गया एंड एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द सेम वॉज इंस्टॉल्ड ऑन ट्विटर. देयर वॉज अनदर पोस्ट दैट वॉज मेड. नाउ व्हाट इज दिस टूल किट? दिस टूल किट वॉज अ गाइड. ऐसा ये बोला गया कि ये गाइड है on how people can support the farmers protest in India against the three farm laws. As you all know कि इंडिया में जो तीन फार्म लॉज हैं जिनके रिस्पेक्ट में फार्मर्स जो हैं वो रोड पे उतर आए हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री फार्म लॉज दैट पर्टेन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एपीएमसी. मंडी को अबॉलिश किया जाने की बात, ऐसा लोगों को लग रहा है कि मंडी अबॉलिश हो जाएगी. हाउएवर दैट्स नॉट द केस. एंड ऑल्सो कुछ असेंशियल कमोडिटीज का रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं करेगी. तो ये जो लॉज हैं इनको लेकर फार्मर्स आर ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग. नाउ इट इज सेड दैट दिस टूल किट इज अ गाइड डॉक्यूमेंट कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कंट्री में चल रहा है तो उस टूल किट में ये गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरह से लोग उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंट्री में, जो फार्मर्स कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हाउ कैन पीपल सपोर्ट देम यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल किट. देन दिल्ली पुलिस का इसमें क्या स्टैंड है? जब दिल्ली पुलिस, ये केस इनिशियली स्टार्ट यहीं से हुआ था दैट द दिल्ली पुलिस फाउंड आउट दैट अ ट्वीट हैज बीन मेड इट विद रिस्पेक्ट टू अ टूलकिट ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स. सो द पुलिस वांटेड टू सी कि कौन इसके पीछे है. दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द होल थिंग टू सी who are the people involved, and they filed an FIR to probe the conspiracy. And the police also said that this toolkit has played an important role in the Republic Day tractor parade violence. तो पुलिस का ये मानना है कि इस टूलकिट की वजह से ही वो पार्टली हुआ था. दिस टूलकिट प्लेड एन important रोल इन कॉजिंग दैट ट्रैक्टर वायलेंस, एंड दैट इज व्हाई दे फाइल्ड एन FIR टू प्रोब दिस कॉन्स्पिरेसी. नाउ इस केस में अक्यूज्ड कौन थे? हु वर द अक्यूज्ड? दिशा रवि, निकिता जेकब एंड शांतनु मलक. So these people were accused of conspiracy with respect to this toolkit, and it was said that they were working in collaboration with a pro-Khalistani organization to cause violence, to commit violence in India. Now, Disha Ravi ka kya role tha? Disha Ravi was the person who was arrested in this particular case. She's a 21-year-old girl, and she was arrested, and it was said that she's the main conspirator. Now, unke against allegation kya thi? That she had created and edited this toolkit, and she was arrested on February 14, 2021. Moving further, there were these allegations that were levied against her. What was these allegations? Section 124A sedition के अंडर बुक किया गया. She was booked under sedition. Further, under section 153A of the of the IPC, which speaks of promoting enmity between different sections of the society. So through words, visible representations, if you are causing something that might create disharmony amongst people from different groups, caste, religions, then that person is liable to be booked under section 153A. Or the person is causing any movement, and people are taking up any movement in respect of that instigation, that is punishable. Further, 120B of the IPC, which speaks of criminal conspiracy, that you have made an agreement to do some illegal act through illegal means. So these were the allegations that were levied. Now, what was the contention of the girl Disha Ravi? She contended that she's being harassed by police and media house unnecessarily. That was her contention.
Now, bail was given to her on February 23rd by the Patiala House Court, New Delhi. She was granted bail finally. And Nikita Jacob and Shantanu Malak were already given pre arrest bail. Before arrest, they were given bail. All the three people were granted bail. Now, what were the reason for granting bail to Disha? This investigation was continued by the police for a period of 5 days. 5 दिन तक पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया एंड दिशा के अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन एज सच प्रूव नहीं कर पाई पुलिस, एंड दैट इज व्हाई द कोर्ट ऑन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांटेड बेल ऑन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. नॉन बेलेबल ऑफेंस सेडिशन 153A 120B ये सीरियस ऑफेंसेस हैं एंड ये नॉन बेलेबल नेचर के हैं. सो नॉन बेलेबल नेचर के ऑफेंसेस जहाँ होते हैं वहाँ कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे बेल ग्रांट कर सकता है. सो द केसेस if which pertain to sedition or criminal conspiracy, these are of serious nature, and in case of crimes which are of serious nature, such crimes are mostly non bailable and cognizable offenses, and there in these cases the court can grant bail at its own discretion considering the facts and circumstances of the case, and bail is not granted as a matter of right. What did the court observe in this particular case while granting bail? The court said ये जो Zoom meeting है, Zoom meeting हुई थी between these three accused and the Poetic Justice Foundation, two members of the Poetic Justice Foundation. So there was this meeting that was held, and that particular meeting does not really prove that the culpability of accused. कहाँ से कोई ऐसा क्यों नहीं मिला है जिससे ये प्रूव किया जा सके that these people are guilty. Then there was no evidence against Disha Ravi's involvement in the Republic Day violence. So जब इंक्वायरी हुई तो ये पता लगा कि उनका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है दिशा रवि के अगेंस्ट कि उन्होंने रिपब्लिक डे वायलेंस में कंट्रीब्यूट किया हो. Toolkit has nothing to show that it was used to call for violence. There was nothing in the toolkit to show that ये violence जो है वो इस toolkit की वजह से बुलाया गया था on the Republic Day. And further, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फ्रीडम्स की बात करता है, ये बेसिकली हमारा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे. वी हैव द राइट टू सीक ग्लोबल ऑडियंस टू वट एवर वी हैव टू से. सो अगर ये टूल किट ट्विटर पे पोस्ट करी गई है तो ये आर्टिकल 19 के अंदर करी गई है, एंड दीज पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब यहाँ पर क्या केसेस रेफर करे गए हैं, ये पहला केस है. यू नीड नॉट रिमेंबर द नेम एज सच. बेसिकली द जिस्ट इज दैट दीज केसेस वर रेफर्ड टू से दैट जस्ट बिकॉज पीपल आर डिसअग्रीइंग विद द गवर्नमेंट डज नॉट मीन कि लोगों को पनिश कर दिया जाएगा. क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन. अगर लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट बेसिकली सेडिशन. पीपल हैव द राइट टू डिसअग्री विद द गवर्नमेंट. That was essentially the cases that here were referred to. Further, Section 124A is the main law that's involved here. Let's understand what is sedition. As such, आपको पता ही होगा. Sedition basically means any attempt to bring hatred or contempt or disaffection towards the government through words, visible representations, any writing. So anything that causes disaffection or hatred or contempt towards the government, that is known as sedition. Such an act is known as sedition. An allegation against Disha Ravi did not fit under this particular section, and therefore that is why she has been granted bail in the matter. So with this particular video has ended. I hope the toolkit case is clear to you. Just in case any further doubts you have, you can mention the same in the comment box below. And if you want to stay updated with such videos, then you can subscribe to our channel, like this video, and share it with your friends.